अपॉर्चुनिटी डोंट हैपन, यू क्रिएट दैम। अवसर आते नहीं हैं, अवसर पैदा किए जाते हैं, अवसर बनाए जाते हैं, और ये आप बनाइएगा। इसी विश्वास के साथ शुरुआत करते हैं आज का वीडियोस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नैरो स्पेसिंग बिटवीन आइसोथर्म indicates small or slow change in temperature of a given area. Isotherms are more or less parallel to the latitudes in the southern hemisphere. जब नैरो स्पेस होगा दो आइसोथर्म या दो से अधिक आइसोथर्म रेखाओं के बीच, तो इसका क्या मतलब है? स्लो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में बदलाव बहुत कम हो रहा है क्या किसी क्षेत्र विशेष में। और जहाँ पर मतलब आप अगर दक्षिण हेमिस्फीयर में जाइएगा, दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये जो आइसोथर्म है वो मतलब लेस पैरेलल है, आई मीन लेस पैरेलल टू द लैटिट्यूड्स, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर का बदलाव बहुत कम होता है, तो उनके बीच तो गैप तो होगा नहीं। तो आइसोथर्म आर मोर और लेस पैरेलल, ठीक है, बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आइसोथर्म जो है ना एक इमेजिनरी काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि समान टेम्परेचर वाले स्थानों को मिलाती है। हॉरिजेंटल या फिर लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज शोन विद द हेल्प ऑफ द मैप विद द आइसोथर्म। तो जिन जिन क्षेत्रों का अगर आपको हॉरिजेंटली रूप से अगर टेम्परेचर को बताना है, तो आप बता सकते हैं कि कैसे कैसे क्षेत्रों में टेम्परेचर बराबर है कि नहीं। इसके लिए आइसोथर्म ग्राफ का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो लेट्स सी द इफेक्ट्स ऑफ द अल्टीट्यूड। हालांकि इसमें अल्टीट्यूड का ध्यान नहीं रखा जाता है। इफेक्ट्स ऑफ अल्टीट्यूड आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग एन आइसोथर्म। जब आप आइसोथर्म खींच रहे होते हैं तो आप कितने ऊंचे पर्वत पे खड़े हैं या कितने गहराई में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑल टेम्परेचर आर रिड्यूस टू सी लेवल्स। सारे के सारे टेम्परेचर जो है ना सी लेवल में आके रिड्यूस हो जाते हैं। नैरो स्पेस, अगर दो रेखाओं के बीच अगर स्पेस कम है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रैपिड चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, हाई थर्मल ग्रेडियंट है। वाइड स्पेसिंग, अगर बहुत ज़्यादा चौड़ाई है रेखाओं के बीच, तो इसका मतलब है स्मॉल या फिर स्लो चेंज ऑफ द टेम्परेचर, इसको लो थर्मल ग्रेडियंट बोलते हैं। द इफेक्ट ऑफ द ओशियन इज वेल प्रोनाउंस इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जो इस दक्षिण में, तो दक्षिणी गोलार्ध में तो समुद्र ज़्यादा है ना, वाटर बॉडी ज़्यादा है, तो एक तरह से पानी का अपना इफेक्ट होता है। तो वाटर इफेक्ट के कारण क्या होता है ना, ये ढेर मतलब ये आइसोथर्म जो होते हैं ना वो बहुत ही या तो लेस या तो ना के बराबर पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं, एंड वेरिएशन इन द टेम्परेचर इज मोर ग्रेजुअल देन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये वेरिएशन आपको स्पष्ट दिखने को मिलते हैं। हालांकि द लैटिट्यूड्स, द वेरिएशन इन द टेम्परेचर इज मोर ग्रेजुअल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इज मोर ग्रेजुअल देन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तुलना में यहाँ पर वेरिएशन थोड़ा सा स्पष्ट आपको देखने को मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर विच अफेक्ट द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। पृथ्वी पे तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रभाव नहीं पूछा, मतलब क्या क्या इसके फैक्टर है जो इसको प्रभावित कर देता है। एक तो लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, लैंड और सी डिफरेंशियल भी कहीं ना कहीं रोल तो निभाता ही है। तो बिल्कुल सब के सब जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी लैटिट्यूड्स। डिपेंड करता है कि किस लैटिट्यूड पर पड़ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। इन द ट्रॉपिकल क्षेत्र में जो इंसोलेशन होता है वो हाइयर होता है देन द अमाउंट ऑफ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इंसोलेशन की जो मात्रा होती है वो ट्रॉपिकल क्षेत्र में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की तुलना में ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि रेन ऑफ द सरप्लस हीट, और ये क्षेत्र जो है ना हीट को सरप्लस कहलाएगा। जबकि पोलर रीजन में जाइएगा तो हीट गेन इज लेस देन द हीट लॉस, वहाँ पर तो हीट को लॉस ज़्यादा होता है, हैंस इट इज ए डेफिसिट हीट क्षेत्र। Thus, the insolation creates an imbalance of heat
एट अ डिफरेंट लैटिट्यूड। तो इस प्रकार आप अलग अलग लैटिट्यूड में टेम्परेचर का मतलब एक तरह से डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो इसको जनरली कहा जाता है लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। दिस इज नोन एज है लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। Transparency of the atmosphere determine the amount of insolation reaching the Earth's surface. Transparency depends upon the cloud cover, its thickness, dust particles, and water vapor as they reflect, absorb, or transmit insolation. Thick clouds hinder the insolation to reach the Earth, while clear sky helps it to the reach surface. Water vapor absorb insolation, resulting the less amount of insolation reaching the surface. Land and sea differential or contrast affects the temperature to a great extent. Land gets heated more rapidly and to a greater degree than the water during the sunshine. जो जितना तेजी से गर्माएगा उतना जल्दी ठंडा भी तो होगा. It also cools down more rapidly than water during the night. तो रात में ठंडा जल्दी से हो जाता है, लेकिन वाटर तो गर्म में रहता है. इससे क्या होगा? टेम्परेचर इज रिलेटिवली हायर होगा ऑन द लैंड ड्यूरिंग द डे टाइम एंड इट इज़ हायर इन द वाटर ड्यूरिंग द नाइट. तो इससे क्या होगा? इन द सेम वे देयर आर सीजनल कंट्रास्ट इन द टेम्परेचर. ड्यूरिंग द समर द एयर above द लैंड हैज़ हायर टेम्परेचर than the ocean, but the air above the ocean gets higher temperature than landmass in the winter. Which of the following are the favorable conditions for temperature inversion? Long winter sky, cloudy sky, rapid movement of air, snow covered ground surface. एक तो लॉन्ग विंटर चाहिए, रैपिड मूवमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए, 3 खत्म. और अगर स्नो कवर्ड है तो प्रकाश प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होगा, 1 और 4. टेम्परेचर इन्वर्सन इज द रिवर्सल of the normal behavior of temperature in the troposphere, in which a layer of cool air at the surface is overlain by a layer of warmer air. Favorable conditions for temperature inversion are long winter nights, loss of heat by terrestrial radiation from the ground surface during night may exceed the amount of incoming solar radiation. Cloudiness, the clear sky, loss of heat through terrestrial radiation proceeds more rapidly without any obstruction. Dry near and ground surface. It limits the absorption of radiated heat from the Earth's surface. Slow movement of air results in no transfer or mixing of heat in the lower layers of the atmosphere. Snow covered ground surface, it results in the maximum loss of heat through the reflection of the incoming solar radiation. Consider the following statement regarding the general circulation of atmosphere. The winds in the upper atmosphere are controlled by pressure gradient and Coriolis force. Hadley cell form from the circulation of winds between the sinking cold air from the poles and rising warm air from the subtropical high pressure belt. Aral cell formed between 0 to 50 degree north and south equator. Which are the correct?
ओनली एंड ओनली एक इज राइट. देखिए वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द winds आर द नेट रिजल्ट of wind generating force. Winds in the upper atmosphere, I mean 2 to 3 kilometer above the surface, are free from frictional effects of the surface and are controlled by the pressure gradient and Coriolis forces. Hadley cell is located between 10 degree to 30 degree latitude in the both hemisphere. This is a thermally induced cell and it is a result of intense solar insolation. The intense insolation produces rising along the equator. The rising cools down below tropopause and diverges towards the pole as anti-trade. They lead to upper air pilation around 30 degree latitude and sink causing the subtropical high pressure. The trade winds flow from the high pressure towards the equator and completes this sail. It is one of the most permanent sail and it is associated with the tropical monsoon climate and tropical desert. Feral sail in the middle latitudes, the circulation is that of the sinking cold air that comes from the poles and rising from the warm air that blows from the subtropical high. At the surface, these winds are called westerlies and it is known as feral sail. Consider the following statement regarding the jet stream. Air north of the jet stream is typically colder, while air south of the jet stream is usually warmer. Jet stream travel in stratosphere. Slower, weaker jet stream have been linked to the melting of ice in Greenland. Which are the correct? चलिए एक और तीन ही सही है. Jet stream are the fast moving currents of air that circulate above the earth. When people refer to the jet stream, they are usually referring to the polar front jet stream, or subtropical jet stream, the two major jet streams that shape weather patterns around the world. Jet stream travel in the tropopause, the area between the troposphere and the stratosphere. The stratosphere और troposphere के बीच जेट स्ट्रीम ट्रोपोपोज में चलता है, कम से कम 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई में. जेट स्ट्रीम आर स्ट्रोंगर in winter in the northern and southern hemisphere because that when air temperature differences that drive them in tend to be most pronounced. The polar front jet stream forms at about 60 degree latitude the both the hemisphere while the subtropical jet stream forms at about 30 degrees. Air north of the jet stream is typically colder, while air to the south is usually warmer. A jet stream deep or break off, they move air masses around, creating shifts in the global weather patterns. Rising global temperature from the global warming are the affecting the jet stream and in turn the weather because of the Earth's polar region are warming more quickly than the rest of the world. The temperature contrast that drive jet stream has decreased. Slower, weaker jet stream have been linked to the melting in the Greenland and a potential rise in the deadly weather events because they can lock weather system into the place, stalling them over region. Consider the following statement. Water vapor plays a crucial role in the Earth's budget. The amount of the water vapor present decide the quantity of latent heat
latent energy stored up in the atmosphere for the development of storm and cyclone. I think both the statements are right. Water vapors in air varies from 0 to 4% by volume of the atmosphere, averaging around 2% in the atmosphere. Amount of water vapor, that means humidity, is measured by the instrument is called hygrometer. Water vapor absorb radiation, both incoming, terrestrial, thus they play a crucial role in the Earth's heat budget. The amount of the heat vapor present decide the quantity of the latent energy stored up in the atmosphere for the development of the storm and cyclone. The atmospheric moisture affects the human body's rate of cooling by influencing the sensible temperature. Consider the following statement. Dew point occurs when relative humidity is 100%. Relative humidity is greater over the continents and the least over the ocean. A specific humidity does not depend upon the changes in the pressure or temperature. Yes, of course. 3, 1, and 2. Only and only 1 and 3 is the right answer. You know about why? Dew point. The air containing moisture to its full capacity at a given temperature is said to be saturated. It means that the air at a given temperature is incapable of holding any additional amount of moisture at this stage. सिंपली सेचुरेशन स्थिति में एयर जो है उस टेम्परेचर पे होता है जिस टेम्परेचर पे और एक्स्ट्रा वो मॉइस्चर कंटेन नहीं कर सकता है, होल्ड नहीं कर सकता है, तो वो उसका एक तरह से ड्यू पॉइंट हो गया। तो ड्यू पॉइंट पर एयर की कैपेसिटी मैक्सिमम लेवल पर होती है, हवा वहाँ पर सेचुरेट होता है। सेचुरेट का मतलब और ज़्यादा उसमें प्रवेश नहीं करा सकते आप। टेम्परेचर एट विच saturation occurs in a given sample of air is known as a dew point. Dew point occurs when the relative humidity is 100%. Relative humidity का मतलब होता है कि the percentage of the moisture present in the atmosphere as compared to its full capacity at a given temperature. मतलब this is a percentage of the atmosphere, this is a percentage of the air or moisture present in the atmosphere at a particular given temperature as compared to the full capacity of a air at a given temperature. Relative humidity is a greater over the ocean and least over the continents. It determines the amount, the rate of the evaporation, and hence it is an important climate factor. Air containing moisture to its full capacity at a given temperature is said to be saturated. At this temperature, the air cannot hold any additional amount of moisture. Thus, relative humidity is saturated in air is 100%. Specific humidity it is expressed as a weight of the water vapor. तो पहला स्टेट उसमें पूछा क्वेश्चन था इनकरेक्ट शायद। यस, क्योंकि इट इज एक्सप्रेस द वेट ऑफ द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तो वेट में मापा जाता है ना। दिस इज ए वेट ऑफ द वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ द एयर, पर यूनिट वेट ऑफ एयर, उसमें कितना वाटर वेपर का वेट समा सकता है। इट इज़ मेजर इन यूनिट्स ऑफ वेट, यूजली ग्राम्स पर किलोग्राम। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज नॉट अफेक्टेड by the change in the pressure or temperature. क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर से, यहाँ पर पूछा गया है consider the following statements. Clouds are caused mainly by the adiabatic cooling of air below its dew point. Cirrus clouds are formed at the height of 4000 से 7000 मीटर, have a flat base, cumulus या cumulus
clouds are defined as a high clouds? Not at all. दो तीन तो गलत ही है, एक ही सही है. Cloud is a mass of minute water droplets, a teeny crystal of ice formed by the condensation of the water vapor in the free air at a considerable elevation. Clouds are caused mainly by the adiabatic cooling of air below its dew point. As the clouds are formed at some height over the surface of the earth, they take various shapes. According to their height, expanse, density, and transparency or opaqueness, clouds are grouped under the four types: cirrus, cumulus, stratus, nimbus. Cirrus clouds are formed at the height of altitude 8,000 to 12,000 meters. They are thin, detached clouds having a feathery appearances. They are always white in color. Cumulus clouds look like cotton wool. Cumulus clouds look like cotton wool. They are generally formed at the height of 4,000 to 7,000 meters. They exist in patches and can be seen scattered here there. They have a flat base. Cumulus clouds are low clouds, while cirrus clouds are high clouds. Consider the following statements regarding polar vortex. It is an area of the high pressure Arctic air centered around the North Pole. This phenomenon cannot be observed visibly like tornadoes or funnel clouds. Global warming weakens the polar vortex, which is responsible for severe cold in the Northern America and Europe. पहला वाला तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि लोअर प्रेशर क्षेत्र है. तो एक और एक ख़त्म कीजिए, तीन, दो और तीन. पोलर वर्टेक्स एक लार्ज एरिया है लो प्रेशर क्षेत्र का. दिस इज ए लो प्रेशर एरिया, large area of low pressure and cold air surrounding both the Earth's pole. It always exists near the poles. But आजकल क्या हो रहा है, ये कमज़ोर हो रहा है. वीकेंड्स इन द समर, ये गर्मी में थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है और विंटर में मजबूत हो जाता है. विंटर में ध्रुवों के पास चला जाता है और जाड़ों गर्मी में ये थोड़ा सा खिसक जाता है दक्षिण की तरफ. Polar vortex is not something that will be visibly observed like the tornado, funnel clouds, thunderstorm, lightning. इसके कुछ फीचर्स. पोलर वर्टेक्स स्पिन इन स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर में स्पिन करता है. यूजली व्हेन अ वर्टेक्स, जब वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ना, कोल्ड एयर इज लेस लाइकली टू प्लंज डीप इनटू द नॉर्दर्न अमेरिका और यूरोप. तो कोल्ड एयर लेस लाइकली टू प्लंज, मतलब जब वो मजबूत रहेगा तो फिर वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को टच नहीं करने वाला. इन द अदर वर्ड्स, इट फॉर्म्स अ वॉल दैट प्रोटेक्ट्स द मिड लैटिट्यूड फ्रॉम द कोल्ड आर्कटिक. जब ये मजबूत है तो इसका मतलब है एक तरह से दीवार बना के रखा है ताकि आर्कटिक की ठंडी हवाएं अमेरिका और नॉर्थ यूरोप को छू ना पाए या फिर लगभग दूर रहे. लेकिन ओकेजनली द पोलर वर्टेक्स डिस्ट्रप्टेड हो रहा है एंड कमज़ोर पड़ता जा रहा है और ड्यू टू द वेव एनर्जी प्रोपागेटिंग ऑफवर्ड हो रहा है फ्रॉम द लोअर एटमॉस्फेयर. व्हेन दिस हैपन, द स्ट्रेटोस्फेयर वार्म्स sharply in an event known as sudden stratospheric warming. In just a few days, the miles above the Earth's surface, the warming weakens the polar vortex. स्ट्रेटोस्फेयर जब गर्म होगा तो पोलर वर्टेक्स कमज़ोर होगा और जब पोलर वर्टेक्स कमज़ोर होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये शिफ्टेड करेगा अपना जगह, समवट इस साउथ की तरफ घिसकेगा, पोल से होते हुए साउथ की तरफ जाएगा. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है
कि पोलर वर्टेक्स जो है, इसके और भी पोलर वर्टेक्स तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, स्प्लिटिंग द वर्टेक्स इनटू द सिस्टर vortices. A sudden stratospheric warming also leads to the warm Arctic, not only in the stratosphere but also in the troposphere. और ट्रोपोस्फीयर भी तो गर्मा रहा है. वार्मर आर्कटिक, जब आर्कटिक वार्म होगा इसका मतलब है फेवर मोर सीवर विंटर, और विंटर और भी खतरनाक हो जाएगा. वेदर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, middle latitudes including the eastern Europe, Asia and US. According to the Indian Meteorological Department, the heat wave is considered when the maximum temperature of an area reaches at least 40 degrees Celsius for plains and 30 degrees at least 30 degrees Celsius for hilly region. In this respect, consider the following statements. If the normal maximum temperature of an area is less than or equal to 40 degrees Celsius, 40 डिग्री से कम या 40 डिग्री के बराबर हो जाए, then an increase of 5 degrees Celsius to 6 degrees Celsius from the normal temperature is considered a severe heat wave condition. 5 से 6 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का बढ़ जाना नॉर्मल टेम्परेचर से, तो क्या ये हीट वेव नहीं बल्कि सीवर हीट वेव कंडीशन है. अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इज द रीजन इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग मोर हीट वेव्स. यस ऑफ कोर्स, बहुत स्टेटमेंट्स नहीं बल्कि केवल और केवल दो, क्योंकि हीट वेव इज अ पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर मोर देन नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर. जो नॉर्मल का जो सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर है, जैसे 40 डिग्री मैक्सिमम है नॉर्मल में, तो उससे भी ज़्यादा दैट अकर्स ड्यूरिंग द समर सीजन. हीट वेव्स टिपिकली अकर बिटवीन मार्च जून एंड सम रेयर केसेस में तो कभी कभी ये जुलाई में एक्सटेंड कर जाएगा. इसके हीट वेव के कुछ मतलब लक्षण नहीं, बस कि क्राइटेरिया क्या है. क्राइटेरिया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना स्पष्ट है. कुछ क्राइटेरिया देखिए. हीट वेव नीड नॉट टू बी कंसिडर्ड जब तक कि मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए स्टेशन रीचेज एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस फॉर प्लेन्स. जब तक कि प्लेन इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना हो जाए और जब तक कि 30 डिग्री सेल्सियस हिली रीजन में ना हो जाए, तब तक हीट वेव कंसिडर नहीं किया जाता. When the normal maximum temperature of a station is less than or equal to 40 degrees Celsius, heat wave departure from normal is 5 degrees Celsius to 6 degrees Celsius and severe heat wave temperature from 7 degrees Celsius or more. अगर 7 डिग्री सेल्सियस या 7 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तब ये सीवर है. When the normal maximum temperature of a station is more than 40 degrees Celsius, the heat wave departure from normal 4 to 5 degrees Celsius and severe heat wave departure from normal to 6 degree more. When the normal maximum temperature of a station is more than 40 degrees Celsius, अगर नॉर्मल टेम्परेचर ही 40 डिग्री सेल्सियस है, तब जाके हीट वेव जो होगा ना, डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल 4 से 5 डिग्री डिपार्चर जो है, तब बात कर लेंगे हम लोग इसको सीवर हीट वेव. व्हेन द एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर रिमेन 45 डिग्री सेल्सियस. लेकिन अगर एक्चुअल मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री हो या इससे ज़्यादा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसका नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, तब उसको तो हीट वेव डिक्लेयर करना ही पड़ेगा. मैग्नीफाइड इफेक्ट्स ऑफ वेव टू कॉन्सोलिड. In urban areas and lack of the tree covers are known as a urban heat island.
Answer the following statements with respect to photochemical smoke. It is formed due to the high concentration of sulfur dioxide and particulate matters in atmosphere. It is formed in the midday of summer. Ground level ozone is the byproduct of this smoke. Which are the correct? Only and only 2 and 3. Smoke is a term derived from two words, smoke plus fog. It is a kind of intense air pollution. Smoke is the result of the reaction of the emission from automobiles, factories, industry with sunlight and atmosphere. The causes behind the formation of the smokes are different, hence they are classified into two different types. Photochemical smoke, also called Los Angeles smoke, and sulfurous smoke, also called London smoke. Photochemical smoke is created when sunlight reacts with nitrogen oxides and at least one volatile organic compounds is in the atmosphere. The kind of smoke requires neither smoke nor fog. Photochemical smoke is formed during the month of the summer during afternoon when there is a bright sunlight so that the photochemical reaction can take place. Ground level ozone is the byproduct of this smoke. Ground level ozone is not emitted directly into the atmosphere. It results from the photochemical reaction between the oxide of nitrogen, volatile organic compounds in the presence of sunlight. Sulfurous smoke. Sulfurous smoke is the result of the high concentration of sulfur dioxides in the atmosphere. This is usually caused by burning of fossil fuels like coal. Sulfurous smoke is also called London smoke. Which of the following is are the reason for the number of tropical cyclones in the Bay of Bengal compared to that of the Arabian Sea? Warmer Arabian Sea? No. Through like shape of thorough like shape of Bengal, lack of landmass between the Pacific Ocean and Bay of Bengal. Yes, of course, do and team. Tropical cyclone is a rapidly rotating storm system characterized by the low pressure center, close low level atmospheric circulation, strong winds, and spiral arrangements of the thunderstorm that produces heavy rain and squalls. Cyclones in the Bay of Bengal can be attributed to the vast low pressure created by the warm water of the ocean, and the Bay of Bengal gets more rainfall. The Bay of Bengal gets more rainfall with sluggish winds and warm air currents around its and keeps temperature warmer. Air currents around that keeps temperature relatively higher all year. The constant flow of fresh warm water from the perennial river like Brahmaputra, Ganga makes it further impossible to mix the cooler water below. As for the Arabian Sea, it is much calm as the strongest winds helps dissipate the heat, and lack of constant fresh water helps the warm water to mix with the cool water underneath, reducing the surface temperature. The Bay of Bengal shaped like a thorough that makes it more hospitable for storm to gain force. Lack, lack of landmass between the Pacific Ocean and Bay of Bengal tend cyclonic winds to move into the coastal areas, causing heavy rainfall. The Arabian Sea enjoys the location advantage as the winds from the Pacific Ocean encounter the Western Ghats and the Himalayan, cutting down on its intensity
and sometimes never reaching the Arabian Sea. Consider the following statement regarding the tropical cyclone. Presence of Coriolis forces with large variation in the vertical winds speed is required for the formation of tropical cyclone. They are absent in the equatorial zone between 4 degrees south and 4 degrees north. Which are the correct? Only and only B is the right answer. Tropical cyclone or a violent storm that are originate over the ocean in tropical areas and move over the coastal areas, bringing about a large scale destruction caused by violent winds, very heavy rainfall, and storm surges. Tropical cyclone originate and intensify over warm tropical ocean. The condition favorable for formation and intensification of tropical storm are large sea surface with higher temperature than 27 degrees Celsius, presence of Coriolis force, small variation in vertical wind speed, a pre-existing weak low pressure area or low level cyclonic circulation, upper divergence above the sea level system. They originate in two distinct latitude zones between 4 degree and 22 degrees south and between 4 degree and 35 degree north. They are the absent in the equatorial zone between 4 degrees south, 4 degree north because of the absence of the Coriolis force. Next question. The type of the precipitation when warm humid air strikes a mountain range, resulting in the greater rainfall in the windward slope, windward slope of the mountain range is known as orographic rain. Orographic, orographic rainfall, Parvati Varsa. When the saturated air mass comes across the mountain, it is forced to ascend, and as it rises, it expands because a fall in the pressure. The temperature falls and the moisture is condensed. This type of precipitation occurs when warm, humid air strike the orographic barrier like a mountain range head on. Because of the initial momentum, the air is forced to rise. As is the mountain laden air gain heights, condensation sets in, and soon saturation is reached. The surplus moisture falls down as a orographic precipitation along the windward slopes. The chief characteristic of this sort of the rain is that the windward slope receive greater rainfall. After giving rain on the windward side, when these winds reaches to the slope of the descent, their temperature rises, then their capacity to take in the moisture increases, and hence this leeward side or leeward slopes remain rainless and dry. The area situated on the leeward side, which gets less rainfall, is known as rain shadow area. Some arid and some arid, semi-arid regions are the direct consequences of rain shadow effect, like Mahabaleshwar, situated in the Western Ghats, receive more than 600 centimeter rainfall. 600. Whereas the Pune, lying in the rain shadow area,
just 70 centimeter. Next question about temperate cyclone are more pronounced in the southern hemisphere. Tropical cyclone are frontal in origin. Temperate cyclone can form both land as well as sea. In the temperate cyclone, rainfall is slow and continuous for many years. केवल और केवल इसमें सी और डी सही है. दोनों स्टेटमेंट एक और दो गलत है. 3 और 4 is the right answer. Temperate cyclone are confined to 35 degree to 65 degree north south of the equator. More pronounced in northern hemisphere due to the greater temperature contrast. They have a dynamic origin and cyclone formation is due to the frontogenesis, interaction of cold and warm fronts. When the warm humid air masses from the tropics meet the dry cold air mass from the poles, and thus the polar front is formed as a surface of discontinuity. The cold warm air upwards from underneath. Thus, a void is created. Because of lessening of the pressure, the surrounding air rushed into the occupy this void, occupy this void, and coupled with the Earth's rotation, and temperate cyclone is formed. Temperate cyclone can origin on the both landmass and waters, while tropical cyclone form only on the sea with temperature more than 26 to 27 degrees Celsius. They dissipate, 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 dissipate on reaching the land. In the temperate cyclone, associated weather conditions are mild and overcast sky in initial stage and followed by a moderate and heavy rain for a longer period of a long time and large area. So here the less destruction is due to the winds, but more destruction due to the flooding. Consider the following statement. Water circulation is caused as a result from a high pressure system over Indonesia and low pressure system over eastern Pakistan, so eastern Pacific Ocean. El Nino condition in Pacific Ocean. El Nino condition in Pacific Ocean leads to the drought in Indonesia and Australia, and it was devastating effect on the marine life of the coast of the Peru and Equator. Yes, of course, B is the right answer, but one is instead. Water circulation या water से is a cause of the pressure gradient force that result from a high pressure system over the eastern Pacific Ocean and the lower pressure system over the Indonesia. इंडोनेशिया के पास लोअर प्रेशर का जोन बनता है, जबकि पैसिफिक ओशियन के पास ईस्टर्न पैसिफिक जो है, जो पूर्वी प्रशांत महासागर है, वहाँ पर वो जो सिस्टम है वो हाई प्रेशर का होता है. तो दोनों के बीच प्रेशर गैप हो जाता है. तो प्रेशर गैप होता है तो जहाँ लो प्रेशर होता है वहाँ पर हवाएं ऊपर उठती है, वहाँ भारी बारिश होती है, और यही प्रक्रिया एक वाकर सर्कुलर बन जाता है. द वाकर सेल is indirectly related to upwelling of the coast of Peru, क्योंकि वहाँ पर हाई प्रेशर है. तो हाँ, वहाँ पर क्या होता है, एक तरह से अपवेलिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ द पेरू एंड इक्वेटर. इससे क्या होता है, ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है ना, तो कोल्ड वाटर क्रिएट हुआ.
टू द सरफेस, बाहर आएगा, सरफेस पर कोल्ड वाटर आएगा, अपने साथ न्यूट्रिएंट लेके आएगा, तो वहाँ पर इंक्रीजिंग फिश स्टॉक्स बढ़ेगा। लेकिन एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो में ये जो एयर प्रेशर है ना, वो ड्रॉप कर जाता है बहुत भारी मात्रा में, लार्जर एरिया ड्रॉप्स ओवर लार्जर एरिया ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के सेंट्रल पैसिफिक, प्रशांत महासागर के आसपास जो सेंट्रल पैसिफिक एरिया पड़ता है साउथ अमेरिका और पेरू और चिली के पास, वहाँ पर जो प्रेशर बहुत गिर जाता है, ठीक है। क्योंकि वो प्रेशर ड्रॉप होता है, तो प्रेशर जब ड्रॉप होगा तो हवाएं जो है ऊपर उठेगी और इससे वहाँ पर भारी बादल का निर्माण होगा, भारी बारिश होगी। और इसके जस्ट अपोजिट जहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है, जैसे इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर सूखा पड़ जाएगा, अकाल आ जाएगा, आई मीन जंगल में आग लग जाएगा। द नॉर्मल प्रेशर सिस्टम इज रिप्लेस्ड। तो यहाँ पर बात कर ले कि नॉर्मल जो लो प्रेशर सिस्टम है वो रिप्लेस कर जाता है बाय हाई वेस्टर्न पैसिफिक यानी सदर्न ऑसिलेशन से। दिस चेंजेस इन द प्रेशर पैटर्न कोज द ट्रेड विंड्स, और इससे ट्रेड विंड्स की दिशा ही मतलब प्रभावित हो जाती है और मतलब घट जाती है। दिस बिगेन द वॉकर सेल, और वॉकर सेल कभी कभी तो गायब भी हो जाता है यार, और इससे बहुत ही रिवर्स इफेक्ट पड़ता है। दिस रिडक्शन, इसके कारण क्या होता है, द इक्वेटोरियल काउंटर करेंट, जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है जो डोलड्रम्स में बहता है ना 0 डिग्री से 5 डिग्री के आसपास, उसको हम लोग इक्वेटोरियल काउंटर करंट बोलते हैं, वो अकोमोलेट होने लगता है। इक्वेटोरियल काउंटर करंट टू अकोमोलेट वार्म ओशियन वाटर, वो वार्म ओशियन वाटर कनेक्ट वहाँ पर जमा करने लगता है। ओशियन वाटर जमा होता है, अकोमोलेट होता है वार्म वाटर अलोंग दी कोस्ट लाइन ऑफ पेरू एंड इक्वेटर। दिस accumulation of warm water causes the thermocline to drop in the eastern part of the Pacific Ocean, which cuts off the upwelling, और इससे upwelling रुक जाता है। The cold deep ocean water along the coast of the Peru. Climatically, development of El Nino brings drought the western Pacific, जबकि वेस्टर्न पैसिफिक में सूखा, रेंज टू द इक्वेटोरियल कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, जबकि साउथ अमेरिका के जो कोस्टल इलाका है वहाँ पर बारिश होती है। एंड कन्वेक्टिव स्टॉर्म एंड हरिकेन्स टू द सेंट्रल पैसिफिक, और मध्य प्रशांत महासागर में भयानक तूफान हरिकेन्स जन्म लेता है। सीवर ड्राउट्स अकर इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। Consider the following statement regarding Indian Ocean Dipole. Indian Ocean Dipole is the difference in the atmospheric pressure above the Indian Ocean. Positive IOD results is more cyclone than usual in the Bay of Bengal. Which are the correct about Indian Ocean Dipole? केवल इसमें डी सही है, क्योंकि कोई भी सही नहीं। इंडियन ओशियन डाइपोल इज डिफाइंड बाय द डिफरेंसेस इन सी टेम्परेचर, नॉट एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, ओके। द डिफरेंसेस इन द सी टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन द टू एरियाज या फिर टू पोल्स, इसलिए इसको डाइपोल बोलते हैं। एक वेस्टर्न पोल जो कि अरेबियन सी में, इसको वेस्टर्न इंडिया ओशियन बोलिए। Western poles in Arabian Ocean and eastern pole eastern Indian Ocean and south of Indonesia. इंडोनेशिया के पास और अरेबियन सी के पास का टेम्परेचर का डिफरेंसेस क्रिएट होगा। उस टेम्परेचर डिफरेंसेस के क्रिएट के कारण एक तरह से हवाओं का गति, दबाव का अंतर, ये सब देखने को मिलेगा। आईओडी डेवलप्स इन द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ इंडियन ओशियन। आईओडी जो है ना वो इक्वेटोरियल बेल्ट में बनता है ऑफ द इंडियन ओशियन फ्रॉम अप्रैल से मई, पीकिंग इन अक्टूबर। अक्टूबर में भयानक हो जाता है। अगर पॉजिटिव आईओडी है इसका मतलब है विंड्स ओवर द इंडियन ओशियन ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब बे ऑफ बंगाल की तरफ नहीं, फ्रॉम बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी की तरफ बहेगा, मतलब इंडोनेशिया से होते हुए बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए ये अरेबियन सी की तरफ बहेगा।
दिस रिजल्ट इन द अरेबियन सी। तो चूंकि अरेबियन सी की तरफ आ रहा है तो इसको बोलेंगे वेस्टर्न इंडियन ओशियन नियर अफ्रीका कोस्ट के आसपास, वहाँ पर वार्मर हो जाएगा क्षेत्र। एंड ईस्टर्न इंडियन ओशियन अराउंड इंडोनेशिया बिकम कोल्डर एंड ड्राई। तो जहाँ पर ज़्यादा वार्मर होगा वहाँ पर स्वाभाविक है भारी बारिश होगी, और जहाँ पर कोल्ड होगा वहाँ पर सूखा पड़ जाएगा। निगेटिव डाइपोल ईयर, जिस समय निगेटिव डी आईओडी है, इसका मतलब है ये प्रक्रिया उलट जाएगा, और अब हवाएं जो होगी वो इंडोनेशिया की तरफ बहेगी। मतलब इंडोनेशिया जो होगा ना ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ज़्यादा बारिश प्राप्त करेगा। पॉजिटिव आईओडी अरेबियन सी वार्मर देन बंगाल result in more cyclone usual in Arabian Sea. Negative IOD result in stronger than usual cyclogenesis, formation of tropical cyclone in the Bay of Bengal. Cyclogenesis in the Arabian Sea is suppressed. इसी के साथ थैंक यू।